So good evening friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, here we are about to start the session. Just give me a minute, I am going to make some adjustment and then we are going to start. The PDF for today's session has been uploaded on our Telegram group. You can download the PDF from our Telegram group. आप सीधा जाके PDF download कर सकते हो. And we are about to start the Yojana session here. Okay, so just give me a minute. जल्दी से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे. Vivek, Pranjal, Vidya, Praful, good evening everyone. So let's start the session without wasting much time. Himani, good evening. Uh, this time the Yojana session, okay, so as you know, this is a Sarkari magazine. So what government does, it brags about its achievement. Okay. So here in this Yojana session as well, the government has come out with some editorials and it is bragging about its achievement. So वो सारी चीजें हैं, but I have tried to incorporate some of the past years question. I will try to relate it, okay, कि that what exactly beneficial can you extract for your exam, ठीक है ना, इससे क्या कुछ अच्छा आप अपने एग्जाम के लिए निकाल सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे. ओके, सो हियर वी हैव दिस योजना सेशन दैट इज जनवरी 2022. दिस इज योर पार्ट 1. Tomorrow I will be coming out with part 2. Okay, so this is your part 1 and tomorrow we will be out with part 2. So this is the development that you should know. Okay, so let's start the session then without wasting much time. Now this is the first editorial regarding the Indian space power. Okay, so I have incorporated in the what sort of questions have been asked from Indian space power. तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि past years में question किस टाइप के आए हैं, because this Yojana article is just telling that how Indian space power has evolved. उससे ज्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है. ओके, आई हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन, यू विल कम टू नो दैट एज वेल. ओके, वो भी आपको दिख जाएंगे, बट दीज आर द मेंस क्वेश्चन एंड स्पेसिफिकली द एसे 1. ओके, यो आप देख सकते हो 2020 मेंस का एसे था. द टॉपिक वाज टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वी आर बीइंग असिस्टेड बाय रशियंस. ओके, तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है, ठीक है ना. सो इफ सच टाइप ऑफ एसेज आर आस्क्ड देन डेफिनेटली यू शुड हैव द कंटेंट to deliver. Okay, now the first question is regarding discuss India's achievement in the field of space sciences. अब ये पूछ रहा है कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है स्पेस साइंसेस के अंदर. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अचीवमेंट यू विल बी मेंशनिंग अबाउट हाउ द होल स्पेस साइंसेस हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया. आपके इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक का सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, सो देयर दिस एवोल्यूशन विच इज देयर इन दिस फर्स्ट एडिटोरियल इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि पूरी कहानी लिखी हुई है, पूरा क्रोनोलॉजी बताया है कि कैसे इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व की है, ठीक है ना. वो हम देखेंगे, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, आप आराम से उसके साथ रिलेट कर लोगे. नाउ if you look into this 2017 mains, this is the analytical question that has been asked. अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए. द क्वेश्चन वाज दैट इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेसेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग चंद्रयान, मंगलयान, but not ventured into manned space mission in terms of technology and logistics. Explain critically. Okay, so you need to understand, since the question was asked in your 2017, now by that time there was no mention of Gaganyaan. उस टाइम पे गगनयान के बारे में कोई बात नहीं थी, ठीक है ना. In 2018-19 मोदी जी first made a statement that we will announce a manned mission. Okay, and later ISRO came out with the idea of Gaganyaan. अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है ना. लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. So let's start this editorial. This is again the evolution of this space sector in India, and this is how they are prioritizing. So just keep this chronology in your mind. Why I am saying this? See, to address such type of question, okay, what you can do, you can draw a flow chart with chronology. आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर की शुरुआत में एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो with chronology of the events. Okay, those events have been mentioned in this particular editorial only. So as you know, the Indian space program, definitely we should thank Dr. Vikram Sarabhai. He took interest and somehow in 1962 Indian National Committee for Space Research was established. Okay, again the
launching center was settled in Thumba, that is Thumba Equatorial Rocket Launching Station. It took shape in 1963. ये आती है यहाँ पे. Okay, so Dr. Sarabhai was the architect of Indian space program. You should know his name definitely. You have to mention about him as well. ठीक है ना. अब त्रिवेंद्रम में there was again a center that was set. ठीक है, एक सेंटर त्रिवेंद्रम में बना. This was the initial development. Okay. In 1969 ISRO came to light. यहां से मेन काम शुरू होता है. So you need to understand, even you have to mention about the organizations that were existing prior to ISRO. इस क्वेश्चन के अंदर एक जिक्र आप उन ऑर्गेनाइजेशन का जरूर करेंगे जो इसरो से पहले भी थी. ठीक है ना. So we have this particular Indian National Committee for Space Research. You can mention about it as well. Okay. Later on ISRO came to light. ISRO बनी यहाँ पे 1969 के अंदर. ठीक है जी. And like we said, we send our first satellite, that is Aryabhatta 1, with the help of Soviet Union. Okay. So this shows that how technology plays important role in your international relations. Since we were closer to Soviet Union, तभी तो उन्होंने हमारी help की होगी. Now you can easily write it down in that particular technology based essay that I pointed out. वो essay जो है वो technology वाला है, उसके अंदर आप लिख सकते हो. Now later we sent INSAT B, that is India's first multi-purpose operational satellite. Okay, launched in 1983, demonstrating its ability to bring about rapid and major revolution in India's telecommunication, television broadcasting, weather forecasting domains. Okay, so it was INSAT 1B which was sent in 1983. अब वो टेलीकम्युनिकेशन टेलीब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम जा चुके थे. ठीक है ना. ये डेवलपमेंट था. दिस वाज द अचीवमेंट. ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन इन योर माइंड. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस मेंस 2016 क्वेश्चन. इट इज आस्किंग डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, you should know the complete chronology in your mind. Okay, now later we sent our remote sensing satellite in 1988, that was IRS-1A. Okay, this satellite played important role because it had its utility in diverse areas like agriculture, groundwater prospecting, mineral survey, forestry, etc. So we used to get the systematic imagery related to agriculture, and somehow it helped us a lot in number of areas like crop yield estimation, groundwater and mineral prospects, forest survey, urban sprawl, urban planning के अंदर भी इसका यूज आने लगा था. Okay, wasteland classification, fisheries development program. So these were the utilities and application of your remote sensing. Okay, now I am telling you, in your prelims the question can be asked regarding the application of remote sensing. Okay, सीधा आपसे एप्लीकेशन पूछेंगे कि रिमोट सेंसिंग का क्या एप्लीकेशन है. इन योर 2015-2014 प्रीलिम्स such type of question has been asked. आपसे क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछे हैं, तो ये एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए कि अर्बन स्प्रॉल मॉनिटर करने में, वेस्ट लैंड क्लासिफिकेशन में, फिशरीज डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेटली द रिमोट सेंसिंग हैज द यूटिलिटी. ओके, यू कैन मेंशन इट इजीली. Now came the other idea, that is your GSAT 11, GSAT 29, GSAT 19. Okay, so they are sent to support digital India, and like it is playing important role in boosting the connectivity specifically in rural areas. ग्राम पंचायत को हम आज कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम, ये 5G 4G स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दे आर ऑल मैनेज्ड बाय सैटेलाइट सिस्टम. वो सैटेलाइट से ही चलता है. ठीक है ना. उसके पीछे एक सैटेलाइट है विच इज फैसिलिटेटिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी. ओके, वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड. नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. We became expert in 1994. Okay, we had the indigenous launch capabilities after that, and since then we made a record as well. Okay, बहुत अच्छा record हमने बनाया है यहाँ पे. Now this is the question that they asked in your 2018 prelims. Okay, अब ये question देखो क्या पूछा गया है. The question was on PSLV only. PSLV का ये क्वेश्चन था. मैंने आपको पहले बता दिया, इस एडिटोरियल में सिर्फ गाने गाए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है. हमें यूटिलिटी अपने हिसाब से खुद निकालनी पड़ेगी. ठीक है ना. सो जस्ट पे अटेंशन. दे आर आस्किंग दैट विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
Okay, multiple statements are written and definitely you have to choose the correct answer out of that. Okay, so PSLV launches the satellite useful for earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. Okay, so this statement is right, first statement is right, ठीक है ना, यही इसका मेन एंगल है. Both the statements, second and third, they are wrong. Okay, so only A is the right answer. Second statement is saying that satellite launches launched by PSLV appear to remain permanently fixed. कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. Okay, then GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle. Now this is a 3-stage vehicle. ये 3 स्टेज वाला है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना. Again, there was another question in your prelims 2018. This question was about, with reference to Indian regional navigation satellite system, which of the following statements are correct? Okay, so again, like this has 3 satellite in geostationary and 4 satellite in geosynchronous. This statement is correct. Okay, so IRNSS covers entire India and about 5500 square kilometer beyond its border. This was wrong. It is 1500 kilometer squares with beyond its border. This was the exact figure and this is what you should know about. ये सारी बातें पता होनी चाहिए. And again, A is the right answer. Okay, so you should have the idea what sort of question UPSC is asking. Now again, we will move back to this particular question. So we commissioned the geosynchronous satellite launch vehicle in 1990. The vehicle was designed with 3 stages. Okay, एंड 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन्स. ये क्या है, ये मोटर लगती है इसके ऊपर, स्ट्रैप-ऑन मोटर्स लगती हैं. सो इट इज बेसिकली अ 3 स्टेज विद अपर स्टेज ऑफ क्रायोजेनिक. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रायोजेनिक? वी शुड हैव दैट आइडिया एज वेल. क्रायोजेनिक इन्वॉल्व्स स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन at low temperature. Okay, see the point here is that it is difficult to liquefy hydrogen and oxygen, so you have to maintain a very low temperature. बहुत ही ठंडा टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है. क्रायो को अगर हम तोड़ेंगे, क्रायो मींस इट्स अबाउट कोल्ड, it's about cold. Okay, so this is the point that is there, that hydrogen and oxygen, they are maintained at low temperature. Now you need to understand, hydrogen will act as a fuel and oxygen will act as an oxidizer. Okay, because oxygen is required to burn the fuel. That's the point here. And in the recent past, it is saying that we are now trying to launch Gaganyaan program. We are working on it, and definitely in couple of years we are going to send that program as well. Okay, so मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि why, this is the mains 2017, that why India has not been able to send a manned space mission. तो अब तो आज की डेट में ये क्वेश्चन नहीं लागू होता है, because already we have announced the Gaganyaan program. But what are there in Gaganyaan program? क्या क्या है गगनयान के अंदर? You should have a clear idea about that. Okay, because you need to understand, you have to send astronauts in space, then they have to come back safely. तो जो सेफ्टी मॉड्यूल है आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए. दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट हियर. ओके, सो whatever safety module that ISRO is looking into, it is going to have a really state of the art technology. Okay, now this is how we are working on it. The project has stated objective of demonstrating human space flight capability to lower Earth orbit. Okay, for a defined duration and safe recovery of the mission as well, ताकि safely वो वापस जो है अर्थ पे आ जाए. This is what we are looking forward to evolve. Okay, now you need to understand there are some another important developments that are taking place. You need to understand, recently government announced something called InSpace, that is Indian National Space Promotion Authorization Center, to promote, handhold and authorize non-government private entities to undertake space activities. Basically, we are going to facilitate private players to carry out space activity. Now, why it is required? This could be the serious question. Okay, you should know why we need private participation in the space activity. See, we want ISRO scientists to use their energy and knowledge to explore the deep space, कि डीप स्पेस के बारे में वो जानकारी इकट्ठी करें. दैट व्हाट इज देयर बियॉन्ड मार्स, व्हाट इज देयर बियॉन्ड जुपिटर. ओके, वीनस पे क्या है. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. डू यू वांट योर साइंटिस्ट टू डू द डे टू डे वर्क? क्या छोटे मोटे काम, सैटेलाइट भेजना, आप यही चाहते हो कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर बिजी रह जाए?
No, we want to use their knowledge for other activities, and that's why we want that some of the burden can be shared by private sectors. थोड़ा burden private sector जो है वो share कर लेगा, ताकि जो है आपके scientist बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से काम कर पाएंगे. This is what we are going to achieve here. Okay, so right now this is what the idea is, that this structural adjustment is required because ISRO wants to focus on different missions. Chandrayaan 3 Aditya, that is there to near, you are going to send a spacecraft near to the sun. I'm not saying that it is going to reach the surface of the sun, but it is going to be there to study the sun. Sun को study करने के लिए आप आदित्य 1 मिशन बना रहे हो. Okay, then we have Shukrayaan for Venus. Venus के लिए Shukrayaan है, and Gaganyaan program is already in line. Okay, so these are the things that were there. ये सारे प्रोग्राम सब लाइन में चल रहे हैं. ठीक है जी. This was your first article regarding the ISRO and space program. Now there is another article that is regarding your Indian armed forces. Okay, so this editorial is mentioning about that how Indian armed forces have evolved since our independence, how things were different. Okay, and I am telling you थोड़ा बहुत इन्होंने नेहरू जी का criticism भी किया है इसमें. ठीक है ना. So this article has some of the elements of criticism of Nehru as well. So here they are saying that Indian armed forces, they are been explained in 4 different phases. Okay, that how Indian armed forces, they have undergone the 4 phases since independence, and definitely the phase 1 was started with the Kashmir issue. We know about this thing, that how Kashmir was invaded by the tribals. Those were not tribals, basically those were Pakistani army people. Okay, वो tribals का भेष बना के कश्मीर में घुस गए थे, and then the king of the Kashmir took help from India. We sent our armed forces and somehow the issue is still pending. Okay, वो मामला आज भी अटका हुआ है, and वहां से इंडियन आर्मी का रोल डायरेक्टली हमारे अंदर स्टार्ट हो गया था. This is the point here. ठीक है ना. So other is like we fought a war with China, India-China war 1962, and we know that somehow we lose that war. We were defeated. Okay, so it is said that Nehru somehow undermined your armed forces. नेहरू ने आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन नहीं किया, and this is mentioned in this particular article as well, that this was the decade of budgetary cuts that followed further compounded the problem. Okay, so Indian army के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, and Nehru was criticized for that. Now some of the experts, they have multiple reasons for that. Okay, one of the reason is that Pakistan के अंदर, if you know, at that time there was already a martial law. So Muhammad Ali Jinnah, he died. After that Liaquat Ali Khan, he also died. Okay, and by 1950-52 there was already a martial law in Pakistan. आपके neighbor के अंदर already army rule आ चुका था. So even some of the experts, they said that Nehru was also like, he had this threat that Indian armed forces, specifically Indian generals, they can't be given the leading role. Okay, and this is somehow the Indian army was neglected with the budget cuts as well. वो चीज यहाँ पे इन्होंने बताई थी. ठीक है ना. ये चलता रहा. We know what happened 1962 में क्या हुआ, and there was a major lesson that we learned at that time. So that lesson was that we have to settle our borders. आपको अपने border settle करने पड़ेंगे. Okay, we cannot work with the arrangement of frontier. एक फ्रंटियर और एक बॉर्डर में क्या फर्क होता है? देखो, बॉर्डर इज क्लियरली डिमार्केटेड. फ्रंटियर मींस देयर इज अ ह्यूज माउंटेन. नेचुरल फ्रंट हमारे को सेपरेट करता है. अर्लियर दिस यूज्ड टू बी द थिंकिंग. ओके, नाउ फ्रंटियर कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ मल्टीपल वे. आपके अकॉर्डिंग फ्रंटियर कुछ और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग फ्रंटियर कुछ और हो सकता है. एंड एट दैट टाइम नो सैटेलाइट इमेजरी वॉज अवेलेबल. तो एक तो बॉर्डर सेटल करना थोड़ा डिफिकल्ट था, कोई सैटेलाइट की हेल्प वगैरह नहीं होती थी उस टाइम पे. सो दिस वॉज द लेसन दैट वी लर्न, दैट वी हैव टू सेटल आवर बॉर्डर्स, एंड how the borders are interpreted differently by Chinese. Okay, Chinese are really smart. They have their own interpretation. Okay, so this is what the lesson that we learned, and later on we started building an army. We started expanding an army. Okay, we worked on taking the army to 8.2 lakh troops. थोड़ा नंबर बढ़ाया गया. Structural changes were made, training, doctrinal shift, everything was done. Okay,
नाउ साइटिंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, अब देखो 1962 में इंडिया वाज डिफीटेड, सो पाकिस्तान थॉट दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सीज द कश्मीर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान को ये लगा कि अब मौका आ गया है, नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी 1964 में, दैट ओके इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज आल्सो वीक, दिस वाज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड पाकिस्तान स्टार्टेड अ वॉर। सो दिस लेड टू द वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान बिटवीन इन 1965. The war ended in the sense that there was no clear winner of this particular war. इस war का कोई winner नहीं था, and I am telling you this thing, Indian army really fought this well. Okay, so Indian army ने बहुत अच्छा लड़ा यहाँ पे, the war ended in a stalemate. Okay, और बाकी बहुत अच्छी चीज थी यहाँ पे. However, this peace with Pakistan lived short-lived, and in 1971 we had another problem. Okay, so there was a major crisis going on in East Pakistan, and how the Pakistani army was brutally violating their human rights. They were killing people, many rapes were there at that time. Okay, so this was the horrendous nature of Pakistani army. Millions of refugees, 10 million, and I am telling you it's near about 1 crore refugees entered India. Now you need to understand that time was really serious for us, because we were not having a food arrangement for the local population. भाई आपके इंडियन सिटीजन के लिए तो खाने का अरेंजमेंट है नहीं. हाउ विल यू अरेंज एडिशनल फूड फॉर द 1 करोड़ पीपल? 1 करोड़ लोगों के लिए एडिशनल खाने का अरेंजमेंट, इट वॉज अ रियली रियल क्राइसिस फॉर इंडिया. एंड एट दैट टाइम समहाउ वी ट्राइड टू हेल्प the Mukti Bahini. Okay, we wanted that people of East Pakistan, they should get their right, and that's why the war started, and we knew the history. Okay, rest is the history. So it was a classic surrender of 90,000 soldiers from Pakistan, and East Pakistan became Bangladesh. This is the clear picture. This is the clear picture. Okay, later on in 1980s we saw a new phase. Okay, already the Indian army was well prepared, and we put a lot of effort to modernize Indian army since then. Okay, so there was a major challenge in Somdong-chu, met by the Chinese, and at that time we had this capacity to transport the entire brigade by helicopters. पूरी की पूरी ब्रिगेड को आपने हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किया था, एंड चाइनीज वर सरप्राइज्ड. They were really surprised with this particular development. Okay, we knew that later on Pakistan created a problem, and we had this problem in Kashmir that was related to terrorism, insurgency. It was again a challenge for Indian army. Why it was a challenge for Indian army? See, you need to understand one thing. Your army is trained to kill. They are trained to kill. They are not trained to manage civilians. Civilians को मैनेज करना उनको नहीं आता है, and if they are deployed in Kashmir, definitely it will be a difficult thing, because now your army was given the responsibility to win hearts. They had to approach the people. They have to take the people centric approach. They have to win hearts and minds of the people. They need to develop the local understanding. This was a challenging thing, and this is how we brought a new regiment, that is राष्ट्र राइफल. तो हमने इस पर्पस के लिए बाद में राष्ट्रीय राइफल्स भी बनाया. Okay, so this was the thing, that Indian army can be deployed in civilian areas as well, and since it is deployed in Kashmir, we know this particular part. Later on, Kargil experience was there, and we know that it was a major intelligence failure. So you need to understand, even the military intelligence failed. Even the military intelligence failed at that time. Okay, so definitely some of the heads were rolled. There was a Kargil review committee. Some of the major recommendations were suggested to reform the armed forces. Okay, so presently, as you see, we had a post of CDS, Chief of Defense Staff. So it was first suggested by the Kargil review committee. इन्होंने suggest किया था कि क्या improvement करनी चाहिए. There are a lot of things that we are seeing in our armed forces today. जो सब चल रहा है, integrated command and all. Okay, integrated theater command, we are already working on that. So all this has been suggested by the Kargil review committee, and somehow we are now trying to modernize our armed forces. Okay, आज की डेट में there is another phase, that is the phase 4. This policy has a zero tolerance, and specifically
zero tolerance towards terrorism. We knew that part, that how Indian army played the important role. There were cross LOC surgical strikes. Okay, there were strikes in Myanmar as well. So this is how presently we are engaged with Chinese and we are dealing with them. Okay, ये आज की डेट का चैलेंज चल रहा है. राइट नाउ इवन योर आर्म्ड फोर्सेस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आत्मनिर्भर भारत. ओके, आत्मनिर्भर भारत में आपकी आर्म्ड फोर्सेस भी पार्ट ले रही हैं. दिस इज द पॉइंट हियर. ठीक है ना. सो वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज आवर आर्म्ड फोर्सेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स. एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम. ये आज की डेट की डेवलपमेंट है. This is the development that we have. Okay, and this is what we should know, and this is what is there in this article. So आपके इस आर्टिकल में ये बताया गया है. Now we are going to start the third article, and I am saying this is the most important one, most important article, because you need to understand in each and every line there can be a one question. एक क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, because this is regarding your modern history. ये मॉडर्न हिस्ट्री का आर्टिकल है जो यहां पे आया है. ठीक है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सो वट एवर इज देयर इन द न्यूज, वट एवर इज देयर इन दिस योजना, यू हैव टू कीप इट इन योर नोट्स. अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज डेफिनेटली सम इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग सम ऑफ द पर्सनैलिटीज. कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी. ओके, अब वो आपके नोट्स का पार्ट होनी चाहिए. आई एम सेइंग दिस इज हिस्ट्री, एंड वट एवर इज देयर you have to note it down. Okay, as simple as that. So each and every statement can be a question itself. Okay, so right now the idea is regarding the Swadeshi and entrepreneurship. Okay, so the idea of economic Swadeshi emerged by the second half of 19th century. Definitely we have writers like R.C. Dutt, Dadabhai Naroji, M.G. Ranade. These writers, they exposed the Britishers. इन्होंने क्लियरली एक्सपोज कर दिया था दैट हाउ इंडिया वॉज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द colonial masters. Okay, there were already, like we know that Swadeshi movement was there, but there were already some of the movements that were prior to Swadeshi movement. So already you had something called, like definitely some of the educated Punjabis. So these are the names: Lala Lajpat Rai, Lala Harkrishan, Lala Dayal Singh Majithia. They came together to found Punjab National Bank. Now please pay attention. This can be a question, this can be a statement for your prelims. As it is, prelims के अंदर ये क्वेश्चन उठा के डाल दूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन कौन एसोसिएटेड था. So you should know about them. Okay, so we have three gentlemen: Lala Lajpat Rai, Lala Harkrishan Lal, and Sir Dayal Singh Majithia. Together they found Punjab National Bank. इतना आ गया समझ में आपको. Okay, later on in Bombay as well, there were some developments taking place. So you have Parsi royal lawyer Ardashir Burjoti Saurabhji Godrej. Okay, he played important role specifically to have the unit for indigenous manufacturing. Then there is another name and the important one. अब ये याद रख लेना, as it is अपने prelims में डाल लो notes के अंदर. Acharya Prafull Chandra Ray. Okay, a pioneer chemist and the founder of Bengal Chemicals. Okay, India's first pharmaceutical company. This is the information that you should know, because the statement can be made, 3-4 names will be there, and who of them are associated with the Bengal Chemicals. This can be the question. समझ गए ना क्वेश्चन कैसा आएगा? 3-4 नाम दिए होंगे और बोल देंगे which of them are associated with Bengal Chemicals. So you have to identify that it was Acharya Prafull Chandra Ray who was associated with Bengal Chemicals. Okay, then you have Nab Gopal Mitra, who used to organize a fair to promote Swadeshi enterprise. He was again very famous personality. Okay, and the major idea behind that was self-reliance or Atma Shakti. Okay, later on we have Jyotindranath Tagore. He launched inland river steam navigation service. Again important for your prelims. Okay, this name is important, this particular company is important, that is Inland River Steam Navigation Service, and it was basically founded by Jyotindranath Tagore. This is what you should know. ये आपके नोट्स में होना चाहिए as it is. ठीक है ना. आगे चलिए देखिए. Swadeshi enterprises, definitely we know that how during the partition of Bengal there were major agitations and there were many you can say companies that came to light at that time. So we have Satish Chandra Mukherjee's Dawn Society. Okay,
Satish Chandra Mukherjee's the Dawn Society, they used to organize Swadeshi fairs, मेले वगैरह organize करते थे. And we had Rabindranath Tagore's Swadeshi Bhandar, ठीक है जी, जोगेश चंद्र चौधरी's Indian Stores, सरला देवी लक्ष्मीर भंडार. ओके, सो ये याद रखने हैं. सरला देवी वॉज एसोसिएटेड विद लक्ष्मीर भंडार, ज्योति चंद्र चौधरी was associated with Indian stores, Rabindranath Tagore definitely he was associated with Swadeshi Bhandar. Okay, so this is what you should know. They used to work for the revival of traditional craft. ट्रेडिशनल क्राफ्ट के रिवाइवल पे ये लोग काम करते थे. ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया. सतीश चंद्र मुखर्जी की थी डॉन सोसाइटी. ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल में वैसा है. सो सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, वो आपको नोट डाउन करनी है. Later on, we had something called Banga Lakshmi Cotton Mill. Okay, so basically in that, Bengal's leading landlords and the political leaders, they started this Banga Lakshmi Cotton Mill. You had another example, Mohan Chakrabarti's Mohini Mill. Okay, this was again an indigenous effort. इन्होंने यहाँ पे ये बनाया है. ठीक है जी, आगे चलिए. Most of these ventures ended in failure. This is the important information. Okay, because suppose if I have to make a multi statement question, अगर मेरे को प्रीलिम का क्वेश्चन बनाना है तो मैं मल्टी स्टेटमेंट बनाऊंगा. आई विल मेंशन अबाउट 3 स्टेटमेंट एंड इन वन ऑफ देम आई कैन राइट दैट ऑल दीज पर्टिकुलर इंडियन एफर्ट्स वर सक्सेसफुल. So at that time you should be able to identify that no, they were not successful, they were a failure. अब आप इजीली इसको समझ लो क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं यूपीएससी वाले, तो वो हम साथ के साथ बना सकते हैं. ठीक है ना. Now they had a technical knowledge but not always the business acumen. Okay, technical knowledge थी लेकिन business acumen नहीं था, उनको पता ही नहीं था business कैसे करना है. So they failed. Okay, they failed. But their contribution was immense. बहुत शानदार contribution था उनका nation building के अंदर. ठीक है ना. We cannot undermine their role. So there is another important figure that you should know. We are talking about V.O. Chittambaram Pillai. Now he launched Swadeshi Steam Navigation Company from Tuticorin. So in multiple areas different initiatives were taken. So we had the Chittambaram Pillai from Tuticorin who launched the Swadeshi Steam Navigation Company. ठीक है जी, ये पता लग गया. अब बात आती है बैंक की. तो हमें ये तो पता लग गया था पंजाब नेशनल बैंक वाले कौन थे. नाउ कम वी हैव वी कृष्ण स्वामी अय्यर who set up Indian Bank in 1907. Later you should know, like there were other major banks as well. Okay, Bank of India, Central Bank of India, ये सब भी आए यहाँ पे. ठीक है. The first chairman was Firoz Shah Mehta. He was the chairman of Central Bank of India. ये जानकारी हमें पता लग गई. ठीक है जी. Firoz Shah Mehta, very renowned leader here. ठीक है. He was also a chairman of this Central Bank of India. Now महाराजा सयोजी राव सेकंड, लाइक ही फैसिलिटेटेड द बैंक ऑफ बड़ौदा. जो बड़ौदा स्टेट था वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है. ठीक है जी, ये पता लग गया. नाउ डेफिनेटली वालचंद हीराचंद, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द दादाभाई नौरोजी एंड समहाउ ही हैड द नेशनलिस्ट अप्रोच इन बिजनेस. वो उनको अपने बिजनेस के अंदर नेशनलिस्ट अप्रोच वो लेके आए. ओके, हिज आइडिया ऑफ सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी दैट brought a brave fight, okay, to end the monopoly of Britishers. तो ये वालचंद हीराचंद जो है इनकी थी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो. ये हमें मालूम होना चाहिए. नाउ ऑल दिस वाज देयर रिलेटेड टू योर मॉडर्न हिस्ट्री. अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर. तो आप सबने अपने नोट्स बना लिए होंगे. देखो मैंने पूरा बता दिया आपको, मॉडर्न हिस्ट्री की सारी ये चीजें थी. नॉर्मली दीज थिंग्स माइट नॉट बी अवेलेबल इन योर बुक. ठीक है ना. सो जो भी आप बुक पढ़ते हो, like whatever your source is, this might not be available in that. So this is the additional information जो आप अपने notes में बना डाल सकते हो. ठीक है. Now we will move to the next editorial that is regarding your agricultural powerhouse. So we should know the reality here that India somehow we have a huge population to feed. इतने सारे लोग हैं, उनको खाना खिलाना है. So it is important that we should incorporate them. Okay,
इतने लोगों को खाना खिलाना है, मतलब एग्रीकल्चर को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है. वी आर फीडिंग देम, वी आर मैनेजिंग देम, सो वी आर हैविंग नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. 18% दुनिया की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है. ओके, एंड देयर इज अ क्लियर मिसमैच एज वेल. 18% पॉपुलेशन है लेकिन लैंड बिल्कुल कम है, ठीक है ना. देयर इज अ क्लियर मिसमैच एज वेल. ओके, सो डेफिनेटली इट मींस दैट यू हैव टू डू अ लॉट. आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल लैंड, वी आर ओनली 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड एंड 4% ऑफ द वाटर रिसोर्स. ओके, एंड वाटर वी नो दैट इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इट इज अ मेजर चैलेंज एज वेल. आज की डेट में तो बहुत बड़ा चैलेंज है पानी की, ठीक है जी. So definitely agricultural and land reforms, it has remained in news, and somehow in the present time we have incorporated and we have introduced the idea of science and technology as well. और वो हमारी जरूरत है. आप देखो ना, 18% of the global population dependent on 2.4% of the global land and 4% of the water resource. कितना बड़ा मिसमैच है यहाँ पे. ओके, सो बिना इनोवेशन के, बिना साइंटिफिक मेथड के तो हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं. ये रियलिटी है, एंड दैट्स व्हाई वी इनकॉर्पोरेटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इज नॉट द आइडिया दैट वी अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं है, उससे पहले भी हमारा ये आइडिया चलता था. सो वी हैड समथिंग कॉल्ड रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर विच रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ओके, तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया गया एंड लेटर ऑन ये ICAR बन गया, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ओके, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर मेजर फोकस वाज ऑन सेल्फ रिलायंस. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज गिवन द प्रायोरिटी. ओके, सेल्फ रिलायंस हमारा मेल मूल मंत्र था, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना बुरा किया, इसकी एक स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, नाउ ड्यूरिंग द अर्ली 40s देयर यूज्ड टू बी बंगाल फेमाइन. बंगाल के अंदर अकाल आ जाता है. ओके, बंगाल फेमाइन. स्टॉक वॉज देयर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने स्टॉक रखा हुआ था. फूड वॉज देयर, बट दैट फूड वॉज केप्ट फॉर द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट जापानीज. दैट वॉज अ रिजर्व फूड. ओके, मतलब सोल्जर्स क्या पता उसे यूज भी ना करते, बट स्टिल ब्रिटिशर्स डिडंट डिस्ट्रीब्यूट दोज फूड टू इंडियंस एंड नियरली 10 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. दिस वॉज द एग्जाम्पल. तो हमारी साइकी में फूड सिक्योरिटी हमेशा रही है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सो इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक वी हैव फूड काउंसिल. ओके, दे मेंटेन अ बफर स्टॉक. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है. वो बफर स्टॉक इसीलिए है क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत खराब रही है. अभी आजादी से जस्ट पहले तक तो आप फेमाइन झेल रहे थे. 10 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, एंड एट दैट टाइम विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. ही इशूड अ स्टेटमेंट. ही सेड दैट Indians are breeding like rabbits, let them die. Indians are breeding like rabbits, let them die. Okay, फिर किसी ने बोला कि सर खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. His statement was that why Gandhi hasn't died yet. महात्मा गांधी आज तक क्यों नहीं मरा? अगर भूख से लोग मरते हैं तो महात्मा गांधी जी क्यों नहीं मरे? This was the view suggested by Winston Churchill, okay, the UK Prime Minister at that time. So you can easily figure out why it was important for your government of India to focus on food, and that's why right from the first 5-year plan, food security was our focus. So we invested for the agricultural growth. Okay, हमने invest किया, but by second 5-year plan there was some diversion. We shifted towards the industrial development. Okay, the heavy industries and all, हम उसके तरफ जाने लगे. We were dependent on United States scheme. ये PL 480 की स्कीम थी. Under this particular scheme, US used to send food grains to India. ये होता था उस टाइम पे, ठीक है ना. by 1965 we were already under crisis. आपने 62 में लड़ाई हारी थी. There were severe droughts. There was war with Pakistan. Okay, US ने PL 480 के अंडर सामान भेजना भी बंद कर दिया. क्यों बंद किया? 1969 में इंदिरा गांधी नेशनलाइज द बैंक्स. इंदिरा गांधी ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. इट मींस दैट
It was moving against open economy, it was moving against privatization. Okay, US didn't like it and they brought the curbs on that PL 480 schemes कि इंडियन मरते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता. They stopped that PL 480 scheme and at that time we brought the idea of green revolution. So in the third 5-year plan, the government made a strong commitment to make country self-reliant in food grains. This was the idea where you brought in the scientific methods. वो सारी चीजें हम लेके आए. High yield variety seeds were brought from Mexico. Okay, this was the idea that was brought in. So gentlemen, please pay attention. Here is a prelims 2019 question. So prelims 2019 question is related to, okay, the 5-year plans. What were the objectives of 5-year plans? This sort of question UPSC is asking. So right now this particular article is providing us the information that okay, first 5-year plan we focused on agriculture for food, like we focused on like food production, to increase the food production. Second, we focused on heavy industry. Okay, third again the focus was on agriculture. So this is the idea that you have to brought in your notes. अपने notes में डालना है because this sort of question UPSC is asking. Okay, so this question is with reference to the 5-year plans. Which of the following statements are true? So आपको मालूम होना चाहिए, इस आर्टिकल में हमें अब तक ये पता मिला है कि कैसे अलग अलग 5-year plans के अंदर like what was the idea and how India worked. कैसे 5-year plan इंडिया के अंदर रहे हैं. Okay, this is the point that you should know. Now as I told you, the third 5-year plan, the idea was like of high yield varieties were brought in. Okay, so it brought the new dimensions such as multiple cropping, package of good agriculture practices. Okay, जो अच्छी agriculture practices थी वो यहाँ पे incorporate की गई, specifically the modern art of agriculture. Then modern farm practices, irrigation practices that were brought in, fertilizers, chemical fertilizers वगैरह, tractors वगैरह, all these ideas were brought during the green revolution. Okay, and during the post green revolution right now policy makers they are now focusing on other areas. research के ऊपर काम हुआ. many agricultural universities were also established at that time. बहुत सारी agricultural university बनी यहाँ पे. credit support was provided. Okay, input supply, education, institution building, everything was facilitated. ये सारी चीजें की गई primarily for agriculture. Later, to increase the farmers' income, we brought the other idea, that is Operation Flood, that is related to increase the productivity of milk and milk products. ये हमारा focus हो गया अब, ठीक है ना. In 70s we brought this idea as well. आपका यहाँ पे Operation Flood भी आ गया. Okay, this was the other thing that was brought in. So presently, as you see, despite the splendid growth, Indian agriculture is facing some of the major crises. आज की डेट में सबसे बड़ा क्राइसिस जो हम सबको मालूम होता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबको मालूम है, एक छोटी सी चीज है, दैट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग. ओके, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर देयर. तो इंडिया के अंदर every year we are wasting near about 60,000 crore ton, 60,000 ton, okay, और worth 60,000 crore of food. इतना हम वेस्ट कर रहे हैं. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंडिया में बहुत ज्यादा हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर रियली हाई इन इंडिया. वन ऑफ द रीजन इज दैट वी डोंट हैव वेयर हाउस फैसिलिटी. कोल्ड स्टोरेज नहीं है आपके कंट्री के अंदर, वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है. अदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया इज रियली पुअर एट फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमारे यहाँ पे फोकस नहीं है. So you need to understand, if you seriously want to increase the income of farmer, we have to work on these ideas. Warehouse आपको बढ़ाना होगा, food cold storage बढ़ाना होगा, food processing पे focus करना होगा. This is the way we have to move now. Okay, so definitely they are saying that there are some issues like adequate fund allocation is not there, innovative measures might not be visible here. Okay, but right now government is already focusing to incorporate technology with your farm. So we are broughting artificial intelligence, machine learning. Okay, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हो रहा है यहाँ पे. So you are working on intelligent farming here. ऐसा बिल्कुल हो रहा है. We are taking help from Israel as well. Israel से भी हेल्प ले रहे हैं हम. वो इतने कम पानी में इतनी हाई प्रोडक्टिविटी वाली क्रॉप्स निकालते हैं. So we are taking help from them as well. Okay, हम उनसे हेल्प ले रहे हैं. We are
डिप्लॉइंग स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स, रोबोट्स, वो सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है, ई मंडी। बट आई वुड लाइक टू शेयर अ केस स्टडी विद यू। देखो ये ई मंडी जब बनाई थी, ठीक है ना, नैम का आइडिया था, नेशनलाइज एग्रीकल्चर मार्केट, ओके, दैट इट देयर विल बी ई नैम एंड द फार्मर सिटिंग इन हरियाणा विल बी एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट टू अ बायर फ्रॉम कर्नाटका। ये एक अच्छा सा आइडिया था इनका, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन हरियाणा ओनली, ओके। एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया ये हरियाणा के अंदर इन्होंने। The idea was that farmer will now not go to your middleman and will directly sell his product to the buyer. अब middleman की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा farmer जाके buyer को फोन करके बेच देगा। So you need to understand, government brought this idea, but we didn't focus on digital education. हमने farmer को तो educate ही नहीं किया, हमने farmer को educate ही नहीं किया। We didn't work on digital literacy. डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम ही नहीं किया यहाँ पे, ओके। सो अगेन द फार्मर वाज नॉट एबल टू यूज दैट सिस्टम, फार्मर तो यूज कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। सो द होल आइडिया वाज अ फेलियर, ओके, होल आइडिया वाज अ फेलियर। सो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। सो इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दीज पर्टिकुलर आइडियाज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। ऐसे नहीं सक्सेसफुल होता सिर्फ लॉन्च करने से। सो आई एम ऑलरेडी मेंशनिंग अबाउट दिस एग्जांपल टू यू। ई मंडी का एग्जांपल मैंने दिया, कैसे ये फेल हुआ था पायलट प्रोजेक्ट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, गवर्नमेंट हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड एन आइडिया कॉल्ड भारत.नेट। अच्छा, भारत.नेट एक हमने शुरू किया हुआ है, दैट वी विल बी कनेक्टिंग द पंचायत्स। अब सारी पंचायत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करनी है हमने, ओके। सो इट मींस दैट फार्मर विल बी द बेनिफिशियरी। आप मानते होगे ना ये बात, इफ योर पंचायत्स आर कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल फाइबर, देन फार्मर विल बी द बेनिफिशियरी। बट द पॉइंट इज दैट वी आर सो मच बिहाइंड द शेड्यूल। आज की डेट में आप तो इसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, आप ऑप्टिकल फाइबर लगा ही नहीं पा रहे हो। सो फार्मर इज not able to reap the benefit of all these efforts. ये जो शोर मच रहा है, डिजिटल इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, farmer is not getting anything, okay. So this is the point that you should know, this is the point that you should know here. Now we will move to the next part, next editorial, that is regarding your economic transformation, okay. So they are telling that कैसे हम इंडिपेंडेंस से लेके अब तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं, ओके, हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्फ सिंस इंडिपेंडेंस। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी, अगेन एवोल्यूशनरी थिंग विच इज मेंशन्ड इन दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में ये एक एवोल्यूशन बताया कि कैसे इंडिया ने अब तक काम किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको एक चीज पता होगी, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर सम फैक्टर्स दैट वर प्रिवेलिंग। हमारे यहाँ पे क्या क्या फैक्टर चल रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद, ओके। सो इंडिया की क्या हालत थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। Now you need to understand one thing, we were partitioned, आपका कंट्री पार्टीशन हुआ था। It means that some of the resources they went to पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए। The fertile land of Indus वो चली गई पाकिस्तान में। बांग्लादेश के अंदर पूरा टेक्सटाइल चला गया, जूट वगैरह सारा बांग्लादेश में होता था, वो सब वहां चला गया, ओके। और वेस्ट पाकिस्तान में इंडस वाला जो हमारा फूड प्रोडक्शन का एरिया था वो उधर चला गया। इट मीन्स ये क्राइसिस था हमारे पास। Other was that, what about the human resource? Did we have पढ़े लिखे लोग? क्या MBA ग्रेजुएट्स थे आपके वहां पे, ओके। सो इंडिया का लिटरेसी रेट 14% था उस टाइम पे। सो इट वाज द लिटरेसी रेट, मतलब जो लोग सिर्फ साइन करना जानते थे, पढ़ना लिखना जानते थे। आई एम नॉट सेइंग 10th पास 12th पास, ओके। दिस वाज द पिक्चर एट द टाइम ऑफ आवर independence. So it means that human resource was not there who can look into the technology, who can look into the management, जो policy making कर सकें, बड़ी बड़ी बातें वो करने वाले नहीं थे। You take the point that what was the situation of private entrepreneurs at that time, okay. क्या टाटाज इतने बड़े थे जितने बड़े आज हैं? क्या गोडरेज इतने बड़े थे जितने बड़े आज हैं? No, even they were not having the resources. इनके पास भी कोई resources नहीं थे, okay. So when this was the situation, there were some goals as well. Now government के पास एक goal था that they had to promote equitable development. ये government का एक तरीके से goal था equitable development का। Why I am saying this? अगर हम map of India देखें, so we had मद्रास, ब्रिटिश टाइम पे मद्रास के अंदर बिजनेस होता था।
कैलकाटा में बिजनेस होता था, बॉम्बे में बिजनेस होता था, सूरत में बिजनेस होता था, इस एरिया में बिजनेस होता था. इट मींस दैट दीज एरियाज वर ऑलरेडी हैविंग द एडवांटेजेस. यहां पे ऑलरेडी एक इंडस्ट्री थी, यहां पे ऑलरेडी एक इंडस्ट्री थी. ओके, सो आई होप यू कैन फिगर इट आउट. दे वर वे अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया इवन एट द डे ऑफ योर इंडिपेंडेंस एज वेल. इन एरियाज में ऑलरेडी इंडस्ट्री थी, देवर वे अहेड. बाकी जगहों पे तो अभी गेम शुरू करना था आपको. ओके, सो दिस वाज द गोल ऑफ इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड दैट्स व्हाई द आइडिया वाज प्रपोज्ड दैट गवर्नमेंट प्ले अ लीडिंग रोल. हमने मॉडल लिया कि गवर्नमेंट एक लीडिंग रोल प्ले करेगी, दैट देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग, दैट इज 5 ईयर प्लान का सिस्टम आएगा. ओके, दिस इज द आइडिया दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड. डेफिनेटली नेहरू जी सोवियत यूनियन के बहुत बड़े फैन थे, तो उनसे हमने ये आइडिया इनकॉर्पोरेट किया. बट वी इनकॉर्पोरेटेड द मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, कि गवर्नमेंट लीडिंग रोल तो प्ले करेगी, बट प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी ऑन द टास्क. प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करेगा, ओके, बट देयर यूज्ड टू बी अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस राज. एक लाइसेंस राज था यहां पे. ओके, दैट प्राइवेट सेक्टर हैज टू टेक लाइसेंस. आफ्टर अटेनिंग लाइसेंस दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस. दिस वाज द मॉडल दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये हमारा मॉडल था. ओके, योर ट्रेजरी वॉज बैंकरप्ट. कोई पैसा नहीं था, कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था हमारे पास, ठीक है ना. डेफिनेटली देर वर सम ऑफ द इमीडिएट नीड वॉज टू ऑब्टेन पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स. ओके, नया कॉन्स्टिट्यूशन था, इकोनॉमिक को प्लान करना था, दैट हाउ टू कैरी आउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऑल दीज चैलेंजेस वर देयर. ये चैलेंज इनिशियली हमें दिख रहे थे, ठीक है. Another challenge was that how to engage with international economic relations. अब देखो बात क्या थी, we were penalized by Britishers. हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज था. Britishers came as businessmen. आपको मालूम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो सबसे पहले बिजनेस करनी आई थी. So the point was that at the time of independence we were not having a trust on the international system. ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया बिजनेसमैन बन के. So this was the fear in our mind, and that's why Indian economy was not connected with the global economy. हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड नहीं थी. I hope you got the point. It's a valid reason, because we were looted by the imperialist power. We were exploited by the imperialist power. Your forefathers, they could not have afford to let these imperialist forces come again, कि दोबारा आके हमें लूटना शुरू कर दें. ये डर हमारे दिमाग में था. So this is somehow role was there, and somehow Indian economy was also not connected with the global economy at that time. ये situation prevail कर रही थी. Definitely there was a hint, okay, by this 5-year plan model was incorporated. State was to play the direct role. State government, state जो था, सरकार जो थी, वो direct role play करती थी. There used to be a limit on consumption as well as on production. Production के ऊपर भी limit होती थी. अगर private sector आती थी तो उनके ऊपर limits लगती थी. Production के ऊपर limit थी यहाँ पे. Okay, there used to be licensing system. Licensing system था यहाँ पे. This was the whole idea. And somehow this was a disaster as well. इसी पूरे सिस्टम की वजह से आपके कंट्री में डिजास्टर आता है. Why I am saying this? Because this industrial licensing regime, it brought discretionary power to your bureaucracy, and which was misused. There used to be crony capitalism. ये सारी चीजें हुई हैं इस देश के अंदर, and we paid the price, yet your whole economy was a disaster. So in 1991 we opened our economy. We brought something called liberalization, privatization, globalization. ठीक है, but we were pressurized to do that. आपको समझना पड़ेगा. It was a blessing in disguise. ठीक है ना. There was a major crisis. We were not having the money to pay for our imports. That was the situation here. Okay. So before these 1991 reform, हमारी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? He brought the socialist idea, okay, and
द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अब जब बैंक को नेशनलाइज करिए, अब देखो कितना बड़ा डिजास्टर है। 69 में बैंक को नेशनलाइज करते हो, मतलब बैंक को सरकारी बनाते हो, 1991 में फिर प्राइवेटाइज करते हो। ये देखने में कितना अजीब लग रहा है आपको? आपको अजीब नहीं लग रहा दैट आफ्टर 22 years you are again privatizing them? So this whole idea itself was a failure. Okay, other idea was that complete takeover of the wholesale trade in the food grain. अब फूड ग्रेन के अंदर सब जगह सरकारी सिस्टम आ गया था। This was the whole picture brought by Indira Gandhi. Now by this time there was a clear cut instruction, clear cut hint that this idea of 5-year plan, it was a major fail. अब ये फेल होना शुरू हो गया। दिस आइडिया ऑफ प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज प्रपोज्ड बाय फेल्डमैन, इसलिए इसे फेल्डमैन मॉडल बोलते हैं। ओके, तो अब ये क्लियर हो गई थी कि इंडिया के अंदर ये सब फेल होने वाला है। अब इंडिया के अंदर ये फेल नहीं हो रहा था, इवन इट वॉज अ फेलियर इन सोवियत यूनियन एज वेल, वहां पे भी फेलियर था ये। ओके, सो गवर्नमेंट tried to incorporate new ideas. We brought in technology policy statement in 1982. Some of the sectors were liberalized, थोड़ी जगहों पे liberalization आनी शुरू हो गई थी। Major effort was done in 1991. Okay, when we opened up our economy, we lifted the restrictions. मार्केट मैकेनिज्म आ गई यहाँ पे, इंपोर्ट्स वर ऑल्सो अलाउड, एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो अलाउड, लाइसेंस राज वॉज कंप्लीटली डिसमिस्ड। अब ये कहानी चलती गई that this is how you completely dismantled the old regime of bureaucratic control. जो bureaucratic control था वो हमने हटाया यहाँ पे। stock market was brought in, competition policy was brought in, okay, new regulators were there, प्राइवेट प्लेयर्स को आने तो दिया बट रेगुलेटर्स भी आए। सो वी हैड समथिंग कॉल्ड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी हैड समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। These were the ideas, these were the initiatives taken after 1991. अब इसका आउटकम क्या होता है? द मेजर आउटकम वाज दैट इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली इट इंप्रूव्ड अ लॉट। दिस वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट वाज ब्रॉट इन। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ गया है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर बढ़ गया है आपके यहाँ पे। ओके, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन। Somehow right now agriculture is having a 15% share in your GDP. 15% share आपका एग्रीकल्चर पे है। ओके, बट if you look into the size of population that is dependent on agriculture, it's huge. Nearly 50 to 60% of your population in rural areas, they are still dependent on agriculture. So you need to understand one thing. It means that if we seriously want equitable growth in India, आज की डेट में आप equitable growth लेके आना चाहते हो, सबको बराबर से डेवलप करना चाहते हो, it means that it is important that we have to focus on agriculture, specifically in rural areas. You have to make sure that agriculture which is not profitable today, you have to make it profitable. ये करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। So somehow agriculture policy is not working in India. We have failed to persuade the farmer to diversify its production. अपने production को diversify कर सके, but we are failing on that. Okay, we have been failed to produce or to facilitate non-farm jobs. Non-farm jobs rural area में होते ही नहीं हैं। These are the challenges that we are dealing right now. ये challenge है आज की डेट में जो हम डील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैड दलवाई कमेटी, ठीक है ना। अब वो बोलते हैं कि डबलिंग द फार्मर इनकम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? इनपुट कॉस्ट कम करेंगे। कितना कम कर लोगे इनपुट कॉस्ट? ओके, so these are the challenges that we have. It has its own limitation. You have to move a farmer, or you have to move people away from agriculture. You have to facilitate non-farm jobs. ये करने जरूरी है यहाँ पे। Without that, definitely we cannot deal with this. It is going to be a major crisis. Okay, so अगर हम बात करें तो we had a demographic dividend which can turn into demographic disaster. It is also one of the reason because we are failing to create non-farm jobs, specifically in rural areas. कोई नौकरी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो दे के रह क्या जाता है, खेती कर लो। लैंड होल्डिंग इज फ्रेगमेंटेड, बहुत छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली अनवायबल, तो अनवायबल तो होगा ही होगा। ओके, कोऑपरेटिव्स आपको लगता होगा फार्मर्स कैन बी ब्रॉट इन एंड द कोऑपरेटिव्स शुड बी फॉर्म्ड। आई एम सेइंग दैट दिस मूवमेंट आल्सो फेल्ड इन इंडिया।
आज की डेट में वी हैव फॉर्म्ड अ मिनिस्ट्री प्रेजेंटली. अमित शाह, like he is handling that ministry, I guess. Okay, is he handling the Ministry of Cooperative Affairs? Please let me know. We had a dedicated ministry of cooperatives, to facilitate cooperatives in India, that farmers, they can come together and they form a cooperative and together they can do their business activity. But the problem is that it is also not picking up. ये भी आपकी डेट में जो है इतना पिक नहीं कर रहा है. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट आर देयर. ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस. इट इज नॉट इजी टू डील विद. ओके, सो जो बड़ी बड़ी बातें हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये चलता रहेगा. दिस वॉज द एवोल्यूशन. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एडिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन मेंशन इन दिस आर्टिकल. राइट नाउ वी आर नाउ फोकसिंग ऑन टेकिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, टू दोज एरियाज विच वर मिस्ड. अब कुछ एरियाज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा था. मेजरली द मोड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, इट फोकस्ड ऑन हरियाणा, पंजाब, ओके, एंड वेस्टर्न यूपी. These were the major beneficiaries of green revolution. Right now what we are focusing, second phase में किस पे ऊपर फोकस डाल रहे हैं? Focus is on northeastern part. Okay, so northeastern part we are focusing to facilitate, to increase the productivity in that part. Okay, ये हमारा focus है. Along with that we are also working on sustainable agriculture. ये भी करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना? Because we know that how green revolution it created some of the problems. कैसी प्रॉब्लम आई? फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज अ लूप साइडेड डेवलपमेंट. सिर्फ ये 3 एरिया डेवलप हुए, बाकी लोग तो डेवलप ही नहीं हुए. अदर देन दैट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. नाउ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. आपका लैंड डिग्रेड हो गया यहाँ पे. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चलता जा रहा है. So these are the problems that were the outcome of the green revolution. So right now we are focusing on improving those things. We are focusing on improving ourselves. तो हम खुद भी खुद अपने आप को improve करने की कोशिश कर रहे हैं. So देखते हैं कितना कर पाएंगे. And definitely if you talk about sustainable development goal या फिर कुछ भी आप उठा के देख लो, so focus on agriculture and specifically the smart agriculture will definitely be there. Okay, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है, उसकी हर जगह बात होती है, ठीक है ना? सो दिस इज द प्रेजेंट पिक्चर दैट वी हैव. सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. सो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, टुमारो वी विल कम आउट विद द पार्ट 2. ओके, देयर आर 5 मोर एडिटोरियल्स दैट विल बी कवर्ड. जो बचे हुए हैं, जो हम कल कवर करेंगे, आर्टिकल जो है 5 हैं आपके यहाँ पे. ओके, सो पार्ट 2 अगेन वी विल बी देयर एट दिस टाइम ओनली 9 PM in the evening. So tomorrow we are going to meet again. So people who are interested, definitely they can join us in part 2 as well. You can see the link. It will be available on our YouTube page, and it will be shared in the Telegram as well as in the WhatsApp group as well. So guys, great. Good night. Thank you very much. Okay. So आपके dreams पूरे होंगे. मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Okay. So लड़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया. जय हिंद. ठीक है ना? दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.